Hello viewers, the question is predict the direction of induced current in the situation described by the following figures A to F. Now a problem is given in which there are different coils as well as in some cases magnets and different configurations, and we have to find out the induced current in different cases. So let us analyze one by them. Let us analyze them one by one. First of all, for this particular diagram. For this particular diagram, there is a coil here, there is a magnet here. The magnet is approaching towards this coil. Now the magnet's south end is approaching towards this coil. When the magnet is approaching towards this coil, it means that there is an increase in flux linkage in the coil. And when there is an increase in flux linkage in this coil, according to Lenz law, there is a creation of south pole here, south pole in this side of the coil. And when there is a generation of south pole in this side of the coil, the direction, you can easily see, I have drawn a certain section of this wire, the incoming, this is the outgoing wire, this point, and the current, you can easily see that to make it as south, the current must come out from this coil side to make it as south pole because of the Lenz law. So the current is moving out. So we can say that the current in this particular coil is moving out and the direction is from QRPQ. QRPQ. This is the direction of current in this case. Now let us analyze the second situation. In this situation there are two coils, axes are common, and on this axis there is a magnet. The south side is approaching towards coil 1 and the north side of this magnet is moving away from this coil 2. Now when the south side of this bar magnet is moving towards coil 1, what happens that there is a generation of south pole here. And when there is a generation of south pole here, it means that you can easily see from this diagram, this part of this coil, that the current must enter into this coil. So we can say that the direction of the current is from PRQP. So the direction is from PRQP. This is the direction of the current in the coil 1. Now for this particular coil 2, we can easily analyze that the north side of the magnet is moving away from this coil, or we can say that the flux linkages in this side of this coil is decreasing, and when the flux linkages are decreasing, it means that according to Lenz law, this side is treated as south and this side is treated as south. It means that this side, opposite side, is treated as north. Now the diagram is in such manner that this side is easily visible. The coil side, north side, is easily visible. So we analyze from this side. So if we see that this is the section of the coil here, to make it as north, you can easily see that the current is coming out to make it as north. So the direction of the current in this particular section of this coil is YZXY. So this is the direction of the current. Now let us analyze the situation, the C case. In this particular case, you can see that there is a battery here, there is a switch here, there is a coil section here, and another coil is also there in front of it. First of all, when the key is closed, the direction of the current is in this manner, as well as the current increases in a instantaneous manner, because when we just press the key, the current starts from 0 to a certain maximum value. So there is a current change, and when there is a current change, it means that the flux linkage in this particular coil is also there. Now there is a generation of a south pole. If we visualize this section of the coil from this side, from the right hand side, if we visualize this particular coil, then this side is treated as south. So in front of it there must be a south because of the increased flux linkages. And for this particular coil, if you visualize this coil from the opposite side, that means from this side, for this particular coil, if you visualize, suppose this is the coil, if you visualize from this side, then this is the north from this side. So a north generation is there, and the north generation means that the direction of current is XYZX. XYZX. So this is the example C, this is the part C, which is XYZX. XYZX. This is the direction sense. Now let us analyze this situation.
there is a particular coil here which is energized by battery. There is a rheostat here. The wiper of the rheostat is moved in such manner that the resistance is decreasing, and when the resistance is decreasing, it means that the current is increasing. So the direction of this current is in this manner. The direction of this current is in this manner. If you see, this is the north sense. This is the north sense, like this. This is the north sense, and this north strength is increasing. So for this particular coil, the face of which is facing this particular coil, there is a generation of north here, north in this side for this coil. And if it is north from this side it is south. From this side it is south. So we can say that according to the south sense, the direction of current here is from ZYX. ZYX. This is the south sense, because this side is treated as the south polarity. So the direction of the current, if it is visualized in this coil, is from Z to Y to X. This is the sense for this case. Now let us analyze this particular part, the E part. Now here, originally the switch is closed, and after that, after some time, it is just released. It is just released. So before it is released, there is a north pole here. You can easily see that the current is entering in this particular section of the coil, and this is the north sense. So if you see this section of the loop of this coil, this is the north sense. And if it is the north sense and the key is just released, it means that from north strength it goes instantaneously to zero. It means that the flux which is linking in this particular second coil, it suddenly becomes zero. And or in other words, we can say that the flux linkages are decreasing. And when the flux linkages are decreasing, the polarity here in this particular section of this coil should be such that, according to Lenz law, it is to increase the strength. So here is generation of south here, because the key is released. Key is released means that the current is suddenly becomes zero, and this side is the north originally. So there must be a south in this side, and when there must be a south in this side, then in the opposite side there must be a north. And when there is a opposite side, there is a north, the direction of current is from X to R to Y. From the north side, you can easily see that the current is entering in this particular section and leaving out from this section. So the direction is from X, R, Y, and inside this coil it is X. So it is X, R, Y, X. Now the last case. In the last case, there is a wire. And in this wire the current is decreasing at a steady rate. Current is decreasing, and we have to find out what is the flux linkage in this particular coil. Suppose this is the coil here. Now this coil is perpendicular. This coil is perpendicular to the wire. You can easily see that this coil is perpendicular to the wire. Now we know that the induced current basically, it is related to the EMF. Induced current is related to the EMF, and EMF is nothing but minus d phi by dt. And phi is equal to B dot A. Phi is equal to B dot A. Or we can say that BA cos theta, where theta is the angle between the area vector and the B. Now suppose the current is decreasing. You can easily see that the direction of magnetic field is always tangent to this circular path. If the current is decreasing, these circles basically they decrease, or if the current is increasing, suppose, then they are increasing. But the direction of B is always opposite to the area vector. The area vector is in this direction, and area vector is always making an angle of 90 degree with B. You can easily visualize. This is the current direction, and this is also the area vector direction. The magnetic field, suppose this is a circular loop, and magnetic field here is perpendicular to this at each and every point of this loop. So we can see that the B is always 90 degree, always in 90 degree with the area vector. So this theta is equal to 90 degree, and phi becomes 0. And when the phi becomes 0, it means that there is no induced current in this loop here. If the current start decreasing, then there is no effect on the induced current. Induced current will not be induced because there is no change in flux here. So for this particular case, we can say that the induced current is 0. Induced current is 0.
नाउ लेट मी एक्सप्लेन ऑल द थिंग इन हिंदी। तो यहाँ पे जो पहला केस दिया गया है इसमें एक कॉइल दे रखी है और एक मैग्नेट दे रखी है। मैग्नेट जो है उसका साउथ हैंड मूव कर रहा है इस कॉइल की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ जब साउथ हैंड यहाँ पे मूव कर रहा है तो इस तरफ जो है साउथ पोल जनरेट होगा, और साउथ पोल जब जनरेट होगा तो इस तरह से स्पाइरल है, इस तरह से इसकी वाइंडिंग है कि इसमें करंट बाहर की तरफ इस तरीके से निकलेगी। तो यानी डायरेक्शन सेंस की जो होगी वो होगी QRPQ। तो ये पहले पार्ट का आंसर हो जाता है। दूसरे पार्ट में दो कॉइल दी गई हैं, एक्सेस जो है कॉमन है। एक मैग्नेट मूव कर रही है पहली कॉइल की तरफ और दूसरी कॉइल से अवे। ये साउथ हैंड है, ये नॉर्थ हैंड है। जब साउथ हैंड मूव करेगा इस कॉइल की तरफ तो ये वाला एंड जो है अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ ये वाला एंड जो है साउथ की तरफ ट्रीट होगा, और जब इस साउथ की तरफ ट्रीट होगा इसका मतलब करंट इसके अंदर जारी होगी। तो यानी कि डायरेक्शन सेंस इसकी जो होगी PRQP इसके अंदर। और यहाँ पे क्योंकि नॉर्थ दूर जा रहा है इस पर्टिकुलर साइड ऑफ द कॉइल से, इस वाली कॉइल से, तो यहाँ पे इस तरफ जो है वो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ इस तरफ जो है वो साउथ पोल जनरेट होगा। अब क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है डायग्राम में साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, ये वाला हिस्सा जो है हमें साउथ वाली साइड का हिस्सा जो है दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम फिर इसको एनालाइज कर सकते हैं नॉर्थ, क्योंकि ये विजिबल है डायग्राम जैसे बनाया गया है बुक में, तो उसके हिसाब से ये वाला हिस्सा जो है साफ दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे जो है इसमें इसको नॉर्थ की तरह ट्रीट करके इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे ये सेक्शन ड्रॉ कर दिया मैंने इस कॉइल का एक सेक्शन, और उससे जो है हम देख सकते हैं कि ये नॉर्थ पोल है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी YZXY। तो ये पॉइंट हो गया क्लियर। उसके बाद ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें कॉइल का एक सेक्शन दिखाया गया है, एक लूप दिखाया गया है, और उसको एनालाइज किया गया एक बैटरी से, और एक जो यहाँ पे स्विच भी लगाया गया है। स्विच ओरिजिनली ओपन है, फिर उसको क्लोज किया गया। इसका मतलब करंट जो है वो इंस्टेंटेनियसली 0 से बढ़ के सर्टेन वैल्यू पे पहुंच जा रही है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉइल जो है इसको अगर हम इस कॉइल को, इस वाली कॉइल को अगर इस तरफ से देखें तो इसमें जो है साउथ पोल जनरेट हो रहा है। फ्रंट में जो कॉइल है, यहाँ पे फ्रंट में कॉइल है, उस ठीक इसके फ्रंट में इस तरफ से अगर हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे इस वाली कॉइल को, तो साउथ दिखेगा। और अगर इसी कॉइल को अगर हम इस तरफ से देखेंगे तो हमें नॉर्थ दिखाई देगा। तो यहाँ पे डायग्राम जो बनाया गया है उसे 3D में अगर विजुलाइज करें तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ से हमें इसकी फिर डायरेक्शन निकालनी होगी। तो नॉर्थ को लेते हुए हमें डायरेक्शन निकालनी होगी, तो ये आती है हमारी XYZX। जो डी पार्ट है इसमें जो है हमें दो कॉइल रखी हैं। पहली कॉइल को जो है एनर्जाइज किया गया बैटरी से, लेकिन सीरीज में एक रेहोस्टेट भी लगाया गया है। रेहोस्टेट को इस तरह से जो है उसके वाइपर को मूव कराया जा रहा है कि उसकी रेजिस्टेंस को घटाया जा रहा है। अगर उसकी रेजिस्टेंस को घटाया जा रहा है इसका मतलब क्या है कि उसमें करंट को बढ़ाया जा रहा है। और अगर करंट बढ़ रही है, जैसा कि अगर इस कॉइल को हम इस तरफ से देखें तो यहाँ पे डायरेक्शन इस तरह से है कि ये पॉजिटिव एंड है, तो करंट इस तरीके से मूव कर रही है। तो यहाँ पे जो है नॉर्थ जनरेट हो रहा है अगर हम इस तरफ से देखते हैं इस कॉइल को। और क्योंकि इसमें करंट इंक्रीज हो रही है तो इस वाली कॉइल को अगर हम इस तरफ से देखते हैं, राइट हैंड साइड से ऑब्जर्व करते हैं, तो यहाँ भी एक नॉर्थ क्रिएट होना चाहिए, नॉर्थ पोल इधर क्रिएट होना चाहिए। और अगर यहाँ नॉर्थ पोल क्रिएट हो रहा है तो इसको अगर अपोजिट साइड से देखा जाए तो ये साउथ पोल क्रिएट होगा। और साउथ पोल क्रिएट होगा उसके हिसाब से हम डायरेक्शन करंट की बना लेंगे, तो वो निकल के आती है ZYX। तो ये इस पार्ट का आंसर हो गया। जो ई पार्ट है उसमें दो अलग अलग कॉइल है, उनको जो है वूंड किया गया है एक पर्टिकुलर कोर के ऊपर, और यहाँ पे एक बैटरी और उसके साथ एक स्विच को सीरीज में लगाया गया है। बस इसमें यहाँ पे डिफरेंस बाकी केस से ये है कि यहाँ पे स्विच को रिलीज किया गया है। ओरिजिनली स्विच जो पहले क्लोज था यानी करंट फ्लो कर रही थी, स्विच को रिलीज किया गया है। जिस समय करंट फ्लो कर रही थी यहाँ पे इस साइड में जो है साफ साफ हम देख सकते हैं कि नॉर्थ जनरेट हो रहा है। अगर यहाँ पे नॉर्थ जनरेट हो रहा है इसका मतलब जैसे ही स्विच को रिलीज करेंगे तो इसका मतलब उसमें करंट सडनली जीरो हो जाएगी। तो फ्लक्स लिंकेजेस घट रहे हैं, फ्लक्स लिंकेजेस अगर घट रहे हैं तो लेंस लॉ के हिसाब से इस तरफ बनना चाहिए साउथ पोल, और इस तरफ अगर साउथ पोल बन रहा है तो इसका मतलब अपोजिट साइड में यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा। उस तरह से हम जो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट निकाल लेते हैं, तो ये निकल के आती है XRYX। ये इस केस का आंसर हो गया। यहाँ पे जो फाइनल केस दिया हुआ है इसमें कहा गया कि एक करंट कैरिंग वायर है, इसके परपेंडिकुलर एक लूप है, और इस करंट कैरिंग वायर के अंदर करंट जो है वो डिक्रीज हो रही है। हमें इस लूप में जो इंड्यूस करंट है वो बतानी है। तो यहाँ जो लॉजिक हम यूज करेंगे सबसे पहला वो ये है कि इंड्यूस करंट जो एक तरह से वो ईएमएफ पर डिपेंड करती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ पर डिपेंड करती है। इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स की अगर बात करें हम तो फ्लक्स होता है B डॉट ए यानी BA cos थीटा। थीटा एंगल होता है मैग्नेटिक फील्ड का और एरिया वेक्टर के बीच का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है सर्कुलर लूप में अगर कोई जनरेट होता है इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली होगा। और वो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन हमेशा होगी, चाहे कोई भी पॉइंट हम चूज कर लें, हमेशा एरिया वेक्टर से 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो इस तरह से हम कहेंगे कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा, फ्लक्स लिंकेज जो है वो जीरो होगा। तो अगर करंट घटती भी है तो उसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बी और ए हमेशा 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं इस केस में। तो फ्लक्स जो है ऑलरेडी जीरो होगा। अगर फ्लक्स जीरो है तो उसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ एज वेल एज इंड्यूस्ड करंट जो है वो जीरो होगी। तो ये इस पार्ट का आंसर होता है। सो होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन।